and you will be happy that we have cast it in Indian accent, जो भारतीय accent है, Indian accent. And let me tell you something about a certain term, that is VAP. VAP. V stands for voice, A for accent, and P for pronunciation. Voice, accent, and pronunciation. As a language facilitator, I feel that it's my moral duty to just communicate, what web is all about. Web क्या है इसको समझाना जरूरी है. Initially I would say voice, accent and pronunciation. So in regarding correctly, as a teacher you must know what web is all about. So voice, accent and pronunciation initially. And now the next point is mannerism. Classroom manners, etiquettes, and other points we will cover is overall class management, which is very, very vital. Overall class management. So let's begin with classroom management. Teaching. A general question. What do you understand by classroom teaching? Could anybody tell me, please? क्लासरूम टीचिंग क्या है? यानी कक्षा में शिक्षण, कक्षा शिक्षण, classroom teaching. What is that? Yeah, could you please speak out while doing? सर, जो हमारी क्लास है उसे चाइल्ड सेंटर्ड बनाना चाहिए. ये नहीं कि मतलब हमने बस पढ़ाया, बच्चे को समझ नहीं आ रहा है, और जो भी है ज़्यादा से ज़्यादा हमें उसे प्रैक्टिकली बताना चाहिए. मीन्स जो भी आसपास उसे यूज़ करना चाहिए, और हमें स्कैफ फोल्डिंग का बहुत यूज़ करना चाहिए. मीन्स हम उसे कंप्लीट डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, बट लिटिल हेल्प जो उससे वो अपने गोल कंप्लीट कर रहा है उसे पीयर ग्रुप में सीखने के लिए करना चाहिए कि वो पीयर ग्रुप में सीखे. सेकेंड, जो भी उसका नॉलेज है वो अपनी डेली लाइफ से कनेक्ट कर पाए, क्योंकि आई थिंक जब वो डेली लाइफ से कनेक्ट करता है तो वो ज़्यादा सीखता है. Fine. Actually my question was what exactly is classroom teaching, and the answer was as simple as anything else. But thank you for your elaborate views. आपने कुछ elaborate views दिए, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये था कि क्लासरूम शिक्षण क्या है? तो what is classroom teaching? So when you are specifically teaching in a classroom, when you are capturing anything, when you are giving transferring your knowledge, being in a classroom, that is called classroom teaching. And classroom, yes, I agree, that does not refer to a confined, cozy place. It can be an open classroom as well. In modern times, we are having open classroom learning. Open classroom learning that refers to a learning which is basically done in open space. Like you must have heard about Vishwa Bharati University, Shantiniketan in West Bengal. How many of you have heard about it? Vishwa Bharati University, Shantiniketan, with which Rabindranath Tagore is associated. Rabindranath Tagore is associated with this university. This is in West Bengal. So this is the first university in the country to have started open classroom learning. In the open space, under some trees, on some lawns, all learners sit, and of course, very, very practical, you can say, kind of teaching takes place. तो ऐसा क्या क्लासरूम शिक्षण, क्लासरूम टीचिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसा अभी बताया, that it should be children centric. जो हमारे यहाँ जो सिस्टम है उसमें बेसिकली ये जो फैक्टर्स हैं इनमें ये शामिल है कि आज बच्चों के लिए हमें चिल्ड्रन सेंट्रिक एजुकेशन, उनको जो चीजें सिखानी है उनको हम अपने माइंडसेट में ये रखें कि बच्चों की छोटी से छोटी गतिविधियां, छोटी सी छोटी एक्टिविटीज, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दे प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड पर्सनैलिटी. अगर हम
एक इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं. सपोज देयर इज वन ट्री, यू नो, देयर इज एनी बिफोर ट्री वी डू हैव अ सैपलिंग. मान लीजिए एक छोटा सा पौधा है, एक नन्हा पौधा है, एंड इट लेटर ऑन टेक्स द शेप ऑफ अ ह्यूज इनॉर्मस, I mean, developed tree. The journey which a young sapling, in taking the shape of a tree, it takes. उस यात्रा के दौरान सैपलिंग में जो चेंजेस आते हैं, जितने भी बिहेवियरल चेंजेस आते हैं, जितने भी उनमें उस पर्टिकुलर यंग प्लांट में, बिकॉज चिल्ड्रन की, बच्चों की हम कल्पना या उनकी हम तुलना कर रहे हैं यंग प्लांट्स, तो उनका जो कहना चाहिए इट्स अ ग्रोथ हियर, जो ग्रोथ पीरियड है, जो डेवलपमेंट का जो पीरियड है, वो उसमें हम चाइल्ड सेंट्रिक होंगे, यानी बच्चे को ज्यादा फोकस में रखेंगे. द चिल्ड्रन मस्ट बी गिवन a key focus. तो ऐसी शिक्षा को चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन कहते हैं, और इसमें बच्चे में जितने भी डेवलपमेंट्स होंगे वो बहुत ही माइंड ब्लोइंग होंगे, दे वुड बी टेरिफिक. और आज की जो प्रैक्टिकल एजुकेशन है उसमें जो हमारे एज कंपेयर टू दी पास्ट फ्यू डिकेड्स, जो पिछले कई दशकों से या कई hundreds of years back, like जो सिस्टम जो लर्निंग का चला रहा था, तो दैट इज नो मोर इन प्रैक्टिस. और हमने उस सिस्टम से जो अच्छी अच्छी चीजें थी, रिसर्चर्स ने दे हैव इवॉल्व्ड, दे हैव टेकन ऑल गुड पॉइंट्स एट वन प्लेस एंड दे हैव गिवन दे हैव रीडिफाइंड एजुकेशन. उन्होंने आज एजुकेशन की नई परिभाषा दी. So when it comes to smaller kids, learning program and all, so they need focus. So the child-centric education focuses children, and when we teach smaller kids, young kids, we have to be very, very, particular about classroom management. Our classroom, and you are very specific, you are very particular about the content. तो कंटेंट मीन्स जो उसकी विषय वस्तु है, जो भी आप पढ़ा रहे हैं, कंसेप्ट, जो भी आपका टॉपिक है, तो उसके बारे में पढ़ाने से पहले इम्पोर्टेंट है या पढ़ाने के दौरान इम्पोर्टेंट है. व्हाट मैटर्स मच इज क्लासरूम मैनेजमेंट, एंड क्लासरूम शुड बी मोस्ट इम्पोर्टेंटली, एज वन ऑफ आवर लर्नर्स gave opinion of, that it should be very, very well disciplined. And now the question arises, will somebody let me know what discipline is all about? What do you understand by discipline? The word discipline. Could you please first spell it out? क्या spelling बताएंगे? Discipline. D-I-S-P-A-L-N-E. Yeah. तो इसकी spelling है, do you all agree? She is correct? You are not sure? Okay, not a problem. Yes. How would you spell the word discipline? Okay. Could you please repeat it? D-I-S-P-L-A-N. No. The correct spelling is not this. D-I-S-I? No. D-I? Ma'am, you please tell. D-I-S-P-L. Okay. Fine. It's of course, by chance you're missing one letter. The correct spelling is discipline. Discipline. The pronunciation is discipline. Discipline. But since we compact it, chunki discipline, discipline, dis and discipline. So D-I-S-C-I-P-L-I-N-E. Discipline. Discipline. Not discipline. It's discipline. So discipline spelling is D-I-S-C-I-P-I-L-E. Yeah, discipline. So the pronunciation, I was talking to you about voice. The voice should be audible. As part of the classroom management, your voice should be audible and must reach every child. Every child sitting in the classroom, every learner rather sitting in the classroom, your voice, you should be audible to him or her.
आपकी आवाज उस तक पहुंचनी चाहिए। एंड यू ऑल मस्ट हैव आई कंटेक्ट्स, यानी टीचर या ट्रेनर जो क्या कंसेप्ट हाईलाइट कर रहा है, आपका जो कंटैक्ट है उन बच्चों से लगातार होता रहना चाहिए। तो वी वर टॉकिंग अबाउट डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन इज बेसिकली इट्स नॉट अ थिंग that can be put anywhere, that can be but that rather needs our internal discipline. I mean, the discipline word or the discipline in real has to be understood with discipline, okay? And the discipline is, it's basically a very important ingredient to understand or live life in a very congenial manner. Discipline gives us a sense of living, sense of decorum, sense of eating, sense of sitting, learning, doing all the worldly activities that has to be done in discipline. But when we talk about the school system, जब भी हम विद्यालय में या शिक्षण टीचिंग के बारे में बात करते हैं तो यहाँ डिसिप्लिन का अर्थ भी लगभग वही होता है जो सामान्य जीवन में डिसिप्लिन होता है। तो इस डिसिप्लिन में या इस डिसिप्लिन का एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट वी हैव टू बी लाइवली इन द क्लास। हमें एक चिल्ड्रन या लर्नर से फेस टू फेस मुखातिब होना है और ऑडिबिलिटी प्रॉपर होनी चाहिए, वो हमें सुन पा रहा है कि नहीं, दैट शुड बी मेड श्योर टाइम टू टाइम। तो हमें समय समय पर उनको पॉइंट आउट भी करते रहना चाहिए और उनके नाम भी हमें याद होना चाहिए, सो दैट वी कैन कॉल ईच चाइल्ड बाय नेम। और उनके साथ वी शुड हैव अ रिलेशनशिप। यस, वी शुड हैव वी शुड हैव अ एमिएबल रिलेशनशिप विद देम, affectionate relationship, and that obviously is वो होती है। Once we are disciplined, it means we are having our learners, we have made them sit in proper manner, and the teachers, it is advisable that teachers should take frequent rounds, not very frequent, but if the classroom is too big, if the number of students is big, if there are many students, you need to, of course, keep an eye, a vigilant eye on each and every child's, activity. And you should try to encourage. You should be so lively. आप इतने जीवंत होने चाहिए. A teacher is always living. You should always prove that you are not a robot. You are a human being. Every now and then, बार बार आपको बच्चों से अपने कॉन्सेप्ट को जो आप पढ़ा रहे हैं उसको आपको इंटरेक्ट करते रहना चाहिए, सो दैट, और जैसे ही आपका एक टॉपिक खत्म होता है, द मोमेंट यू हैव फिनिश्ड अप विद वन टॉपिक, यू हैव टू रिकैपिचुलेट। रिकैपिचुलेट मींस आपको उसको फिर से हाईलाइट करना है, फोकस करना है या एम्फेसाइज करना है कि दिस इज द पॉइंट यू डिस्कस। फिर and later on, it's part of this classroom discipline that you have to motivate the child to produce similar thoughts what they have been taught in the class. उनसे हमें अपेक्षा है, we have to encourage those learners to produce the similar kind of things. And even if a small brief answer comes from that side, we must motivate, we must praise. Appraisal should be there. उसको time to time हम क्लासरूम में अप्रेज भी कर सकते हैं by encouraging, by asking other learners to clap for him, to clap for her, or we can, even the teacher individually can tap, go tapping the desk. So that's a, that's a proof, that's a kind of encouragement, और ये इस बात का proof है that classroom is really being managed in a discipline. So discipline is, classroom discipline is very vital.
And without classroom, proper classroom decorum, none of the classes can be conducted and must be conducted. So before we enter the classroom, we have to ensure that yes, we have this material, we have this concept, we have this content. The content we are going to teach is well understood, we have chalked out all those points. So proper planning should be there. If not written, I would recommend personally that it should be written somewhere in such a secret manner that importantly you can just, while turning the page, you can come to know about the hints and somehow you can produce, those related thoughts in order to make your children understand your concept. तो ये एक अच्छा तरीका है कि आप क्लासरूम में एंटर करते हैं. क्लासरूम मैनेजमेंट का डिसिप्लिन का हिस्सा ये भी है that you have to prepare yourself for that class, for that lecture, so that is mandate for each and everybody. And once you are lively, then 100% there is a guarantee that your concept would be not only understood but it would be appreciated by each and every learner in verbal or in non-verbal way. हो सकता है कि उसमें किसी बच्चे ने, किसी लर्नर ने, उसके लिए उसको he or she may not be having words. Maybe as per situation, but उसकी आंखों में, if you look into his or her eyes, you will find that the child is satisfied. So this is the miracle of the classroom discipline. Once your classroom is disciplined, it means that there is, a complete success. So classroom discipline we talked about, and web initially with you, and that is, child, you can say centric education we talked about, and much more. हमारी लर्निंग सेशन जिसमें स्पेसिफिकली हम लोग मीनिंगफुली यहाँ इंटरेक्शन कर रहे हैं, that should be successful. So let me ask a few general questions, and all of you should find the right or the most appropriate answer from your side. It would be a welcome. आप अपनी ओर से इसके लिए सही opinion बता सकते हैं. For example, two children are having a fight in the class. And meanwhile, it is somebody else's classroom, not yours, and the teacher is not there in the class. Maybe she might have gone to office for any work. But you saw while you are taking a round or you are passing that classroom, you found that two kids were fighting. What would be your initiative that time? आपका सबसे important initiative या उस समय आप क्या करेंगे तुरंत? So your opinion is that you will go immediately, you will approach that side, you will just meddle with them, and you will just first try to know the reason that why they were fighting and what was the real issue. And you will first settle down initially. You will keep them apart and you would try to avoid that, development of any other dispute or fuss. Fine. Any other opinion? Anyone? सबकी opinion अलग हो सकती है. Somebody can say that since it's not my class, why should I get bothered about it? The teacher who has been assigned the class must be, why should I? It's not my, it's not my cup of tea. Why should I just गंदे वर्ड भी यूज करते हैं तो फिर भी मैडम कोई मारती नहीं, हमसे कहते थे डंडा रख दिया बच्चों को मारिए, जिधर आके नहीं मार. उस टाइम आप कैसे समझाते उन बच्चों को, क्योंकि वो एजुकेटेड नहीं थे. मैं ये सब
पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, आप वेस्ट कर रहे हैं टाइम, आप लोग गलत कर रहे हैं। तो ये सब समझाते थे बच्चों को। बच्चे डरते भी, मान जाते थे बच्चे। मुझे लगता है कि बच्चों को मारेंगे हम, और बच्चे उसी बैकग्राउंड से थे, अगर हम मारेंगे तो जिद पकड़ते बैग उठाते थे, वो बैग लेके भागने लगते थे, नहीं पढ़ेंगे हम, उस टाइप के बच्चे थे। So meanwhile, प्यार से समझाना थोड़ा सा। उषा जी, we have got one more query associated with this same. इससे जुड़ा हुआ एक और प्रश्न है कि क्या फिजिकल पनिशमेंट, शारीरिक दंड इसके फेवर में है? नहीं सर, मैं इसके फेवर में बिल्कुल नहीं हूँ। कौन फेवर में है? Is there anyone? No. नहीं सर। तो कॉर्पोरल पनिशमेंट, जिसको हम फिजिकल पनिशमेंट बगल में खड़ा कर हैंड ओवर करिए, या कोई और मुर्गा बना दीजिए, कोई और पनिशमेंट। सर ये सब ठीक है, ये मारना सर ये उसमें सही नहीं है। ऑलराइट, क्या आपको लगता है कि मुर्गा बनाना या इस टाइप का पनिशमेंट देना बच्चों में कहीं इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तो नहीं लाता? नहीं मारना कि मोस्टली एक टीचर आती है, वो एक पर्टिकुलर बच्चे को मुर्गा बना देती है, एंड दोनों को एक साथ पनिशमेंट मिलता है। No, sometimes it is seen that the same child starts enjoying that. Sometimes look at the teacher and he is already, isn't it? So what would you do in that situation when the child has started enjoying that scene? तो क्या करें? सर मैंने इसका आइडिया निकाला था कि पनिशमेंट देना हमें भी अच्छा नहीं लगता था, तो हमने काफी बार पनिशमेंट के मतलब बीटिंग वाला ना दे, उनको आप ऑन वर्क वाला दे, 2 पेज एक्स्ट्रा दे दिया, आपको अल्फाबेट्स 2 टाइम लिखने हैं। That's okay, but then work. See, now the question arises. अब प्रश्न ये उठता है कि जिस वर्क को न करने की सजा के तौर पे वो आदी हो गया, वो इतना खुशी वर्क जैसी चीज को क्यों करने लग गया? वर्क की वजह से तो वो पनिशमेंट ही डिजर्व करता है, और वो अब एंजॉय करने लग गया। She started enjoying that. Ma'am, okay, I'm ready to do that. He did stand on the bench and straight away he went happily, rather making faces with other guys. And as it is going to be awarded for that, he will go with the honor and with perfect confidence. He will say, "Yeah, now I'm going to. All right." And the teacher will just look at that, what to do, and will look outside if my superior's principal or my superior, if any authorities are on rounds or not, because that gives a crisis. How would you come over that crisis? इस संकट से आप कैसे बाहर आए? ये आपको डिप्रेशन दे सकता है। आप में अगर इनोवेटिव कोई थिंकिंग नहीं है, if any person is less competent, तो वो what I feel is first of all depressed होता है। तो क्या होना चाहिए? What would be the right decision? I don't agree with Meena ji, क्योंकि वो जो वर्क वर्ड है उसकी वजह से तो वो पनिश किया गया है। I'm sorry. जो भी उनको पढ़ाया जाता है बहुत अच्छे से अवगत करते हैं, थिंकिंग पावर बहुत अच्छी है उनकी, पढ़ देते हैं, लेकिन वो फिर भी जैसे पढ़ाई में देते हैं वो शैतानी में भी देते हैं। Fine. I would like to edit little. I agree with Meena ji. Yes, in place of corporal punishment, they can be assigned some work, but work of their interest, work of common interest, that the child feels great doing in it, great doing that work. Some sports, any activity. So here she means some creative work. That I agree. Yes, sometimes children are, naughty, they are not doing, that work which has been assigned by the teacher. But verbally, or in black and white, in written, he or she is not able to, she didn't do intentionally. घर पे भी उसने वर्क नहीं किया, पेरेंट्स के कहने पे भी वर्क नहीं किया, वो एक ऐसा ब्रांड हो गया है कि वो वर्क नहीं करता है, उसको भी पता है, टीचर्स भी जानते हैं, एवरीबॉडी इज अवेयर ऑफ, पेरेंट्स आर आल्सो अवेयर ऑफ। उसको वार्न किया गया, उसको नंबर ऑफ टाइम्स पनिश किया गया, लेकिन उसकी आदत में कोई सुधार नहीं आया। तो यहाँ ये आइडिया जो बता रहे हैं मैम, दैट वर्क्स, कि उसके इंटरेस्ट का जो वर्क है, जिसको व्हाट द चाइल्ड लाइक्स टू डू, गेट हिम और हर इन्वॉल्व्ड इन दैट एंड अप्रिशिएट, पैम्पर द चाइल्ड एंड मॉनिटर हिम और हर। इफ दिस डजंट वर्क, go for another trick, but do not ever surrender
if the teacher surrendered, if the teacher said that no way, then of course it means we are doing a crime, it means we are failed, it means we are not having power to accept challenges as a teacher. Because in that way, the teacher, that school, that organization has gone to surrender fully. And that is not the practical learning. I mean, we are bothered about the success of any child. Firstly, at the time of admission, it is mandatory for the schools, for all of us, to be particular about it, that we must interview the parents, we must interact with the parents, we must know about the habits, we must well in advance discuss all those points. What are the do's and don'ts, and what are the hobbies, and what are the interests, and what kind of a child there you are going to adopt, you are going to take, because it's an adoption. ये एक गोद लेने जैसा है जिसमें आप बच्चे की पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं, and your school is being paid fee for it. आप फी के बदले इतनी बड़ी लायबिलिटी ले रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, आपको उन लायबिलिटीज को जब आप नहीं निभा पाएंगे तो दैट विल बी अ फेलियर, अ कलेक्टिव failure. A teamwork is very much required, right from accepting the child till you keep them in the school. तो शुरुआत में ही हम इनको मॉनिटर कर लेंगे कि अगर उनके साथ कोई मेंटल कोई डिसऑर्डर्स है, कोई फिजिकल डिसऑर्डर्स है, कोई उनकी सीवियर वीकनेसेस है, कोई उसका कोई मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं है, ये सारी चीजें, कई बार उसमें एडमेंट बिहेवियर एक्सपल्सन तो नहीं है कि किसी दूसरे विद्यालय से एडमेंट इतना रहा हो बच्चा तो उसको एक्सपेल कर दिया हो, तो ये सारी स्ट्रैटेजीज वर्क करती है और इन सबको मॉनिटर करने का काम इट फाइनली कम्स टू टीचर. इट मीन्स अ टीचर must be a person who is perfectly accomplished from all the sort of learnings from grassroots level. Now the children, when they grow up, they even start abusing, like she talked about that in rural areas. She is looking after NGO, so obviously you get certain people from rural areas also. Now the common thing is that each and every part of the country, each and every part of the world, the children are supposed to be the mirrors of the society. हमारे समाज का ये बच्चे आईना, जो भी हम करते हैं, for examples you will get thousands of examples, आपको हजारों examples मिलेंगे, in which you must have seen that if parents are inside, I mean father is there, and if somebody gives a knock and mama tells that, tell the person outside that papa is not there and papa is in the washroom. When this announcement has already been made, and even if the father has clearly heard it, he will start keeping mum, he will be silent, he will not do any activities inside the washroom, even if he is taking bath, he will not touch the mug, because the announcement has already been made that yes, the father is not present in the house. And the child is noticing every behavior, the behavior of mother, the behavior of father inside. Okay, father is inside my room. Okay, it means this kind of situation if comes, okay, telling lies, yes, is good. Okay, no problem. When my parents are doing, there's no harm in it. So next time, the child is going to make an experiment. So we must be well prepared for it, isn't it? So I mean, children abuse. Can anybody in general let me know the reason? क्या कोई आप लोगों में से एक जनरल रीजन बता सकता है कि गांव में या किसी समाज में बच्चे अब्यूजिव कैसे और क्यों हो जाते हैं? पेरेंट्स को देख के या वो सोसाइटी को देख के. Exactly, this is the right answer. क्योंकि वो अपने आसपास ऐसे परिवेश में, ऐसे एनवायरनमेंट में, ऐसे एटमॉस्फेयर में जीते हैं और सांस लेते हैं कि उनको ये बेसिकली ये उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो कब उस चीज को वो अडॉप्ट कर चुके होते हैं और इट बिकम्स देयर it becomes their property. So before these bad habits becomes their property, the property of the children, we have to stop them, we have to nip them in the bud.
उनको हम शुरुआत में ही खत्म कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, ऐसी हैबिट्स को कल्चर ही नहीं होने देंगे। एंड दिस इज व्हाई एंड आई फील रियली great to announce that the primary education is the backbone of society. The society, the country or the family which monitors primary learning among children, where the small children, young saplings, they learn each and everything, good or bad. If they are monitored properly, I think there is not a single corner in the world which cannot be made or converted into a beautiful place. Because children are the people who have to lead this world after we are gone. So, starting right from the classroom management, talking about the various strategies that the teacher takes, monitoring the children, conveying the messages, conveying the learning, transferring the knowledge, and being watchful at the same time, taking great care of the classroom discipline, making self-management and self-analysis the next day when the same teacher enters and the child is repetitively doing the same things. You have to you have to give yourself a lesson instead of giving the children a lesson. Generally, what we do is, हम बच्चों को lessons देते हैं, we warn them to do this thing and that. If one strategy is not working, instead of leaving the show, adopt a new strategy. Am I correct? Do you agree? If one strategy is not working, go for the second. If the second is not working, go for the other. There are thousands and millions of possibilities. The only thing is your mindset. The only thing is your determination. The only thing is your willpower and your initiative. आपकी willpower, आपकी इच्छा शक्ति, आपका determination, आपका दृढ़ संकल्प, आपकी अपनी मनसा, क्योंकि mindset बनता है आपकी habits। जिन habits को आप बच्चों में transfer कर देंगी, हम लोग कर देते हैं as teachers, as family men, as parents, as father, as mother, as neighbors, of course. So each profession is basically a relation. Everybody is in relationship. दुनिया में सारे लोग एक रिश्ते में बने हैं. Even a shopkeeper, even a person who just trims hair is a father, is a brother. So in that way, if we are transferring, if we are able to transfer that learning to our kids, it means we are going to transfer, we are going to multiply the duplicates. And this art, if you are able to imbibe, I'm damn sure, you will be the most amazing, the most vibrant, and the most successful trainer or teacher or individual or a parent in this world. So that's all for this phase. Have a break. Thank you. Child-centric behavior and much more. Okay. So, and what other points that we were talking about?